Hello all of you. Our last video of our human digestive system is large intestine. Okay. So here we will discuss na कि what will happen. Okay. The food which are not digested in a small intestine. ये तो पता है ना आपको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस किया कि जो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड है वो आपका टेक प्लेस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा जो आपका फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाए. कुछ ना कुछ ऐसे फूड्स हैं जो क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट होता है. ठीक है, वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है. तो वेरी सिंपल, अगर ये पूछा जाए कि जो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो रहे तो वो कहाँ जाएंगे. ठीक है, सो हियर इट इज़ सेड कि जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगा ना वो वहाँ से क्या होगा, पास होके आएगा लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, और एक चीज़ आप जान लो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, एक्चुअली इसका काम ही क्या है कि जो भी आपका अनवांटेड या फिर यूँ बोलो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से क्या करेगा कि बाहर निकालने में ये हेल्प करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या कहता है कि ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके भी अपने रीजन्स हैं. ठीक है, रीजन मीन्स दैट कि इट हैज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरी. फर्स्ट दैट इट इज़ द सीकम. ओके, नेक्स्ट इज योर colon, rectum, and last one is your anal canal. Okay, so what it is say that कि the first it is your cecum, second is your colon, third is your rectum, fourth is what, anal canal. So one by one I will discuss. So what it is said that कि when that unwanted food, okay, just want to come into large intestine for that excretion process. So in short you can say that कि that cecum is the junction, okay, junction of your small intestine and the large intestine. So remember that cecum is the junction of small intestine and large intestine, where it is just used to intake that undigested food from the small intestine. Okay, so you will say that ki it is the junction. What will you say? Junction of small intestine and large intestine. Clear? Then after whatever the food, okay, it has come into the cecum, it has passed into that colon region. colon important काम करता है. important काम means क्या कि देखो हमारा बॉडी जो है ना कभी भी किसी चीज़ को बेकार जाने नहीं देता है. अगर बेकार भी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब जो अनडाइजेस्टेड भी चीज़ है ना, उसमें ये चाहेगा क्या कि अगर कुछ अगर मिल जाए तो उसको भी मैं क्या करूँ, एब्जॉर्ब कर लूँ. तो कोलोन जो पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वही काम करता है. ये क्या करता है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है उसमें से कुछ भी अगर इसको लगता है कि वाटर और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कराता है. तो ये आप याद रखना कि कोलोन इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब वाटर and some nutrition, okay, water and minerals I am writing, which can be used. जो इसको ये लगता है कि हाँ ये यूज हो सकता है, उसको ये कोलन क्या करता है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, फाइनली what will happen, only the solid wastage it is generated. So solid waste, solid residue, that it is what, it is your feces. Feces. Okay, so that feces it has to come out from our body. So how it will come out our body? So it is said that it is also said na in the rectum that feces it is kept for 1 or 2 days. Okay, means you can say कि rectum having pouch like a structure, so they are just used to keep that solid wastage for 1 or 2 days. Then after it is pushed and sent into the anal canal, and in the anal canal you know that the last that it is opening, it is called the anus, and anus having also that muscular opening, and that it is called the anal sphincter, and from that anal sphincter that it will comes out from our body. So what it is say that कि colon, most important thing is that colon it is just used to absorb whatever the water that it is present in undigested food. Okay,
then it is just used to transfer that solid waste that it is called the feces into that rectum. Rectum it is used to keep that solid wastage for 1 or 2 days. Then it is sent into the anal canal, and from that of the anal canal last that it is the anus. From that anus that solid wastage it comes out from our body from with the help of that anal sphincter. So remember that last opening, muscular opening of that anal canal is anal sphincter, from which that undigested solid wastage come out. Clear? So all these were the discussion related to the human digestive system, and that it was the last part. Thank you.